You want me to go in and try, alright, but I charge a fee for approaching a spirit. Otherwise, I always work from a distance. The shopman agreed to the special fee, and the exorcist cleared his throat, adjusted his coiffure, and stood before the door of the shop, proclaiming loudly, "Hey, spirit, I am not afraid. I know your kind too well. You know me well, so." He slid open the shutter, stepped in gingerly. When he had advanced a few steps, the jug hit the ventilator glass and shattered it, which aggravated the cat's panic, and it somersaulted in confusion and caused a variety of metallic pandemonium in the dark chamber. The exorcist's legs faltered, and he didn't know for a moment what his next step should be or what he had come in for. In this state, he bumped into the piled up kerosene tins and sent them clattering down, which further aggravated the cat's hysteria. The exorcist rushed out unceremoniously. "Oh, oh, this is no ordinary affair. It seizes me like a tornado. It'll tear down the walls soon." तो अब जो शॉपकीपर है वो एग्जॉसिस्ट को बोलता है कि उसे शॉप में जाना चाहिए। तो इस पे एग्जॉसिस्ट अग्री हो जाता है कि वो शॉप में जाएगा, बट इसके लिए वो अलग से पैसे लेगा, क्योंकि वो हमेशा जो स्पिरिट्स का काम है वो दूर से ही करता है। तो वो हिम्मत करता है और शॉप में जाता है। तो जैसे ही वो शॉप में एंटर होता है तो उससे जो कैट है वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है उसके आने से और इधर उधर भागने लगती है। ऐसे में वो जो वेंटिलेटर ग्लास है उसे तोड़ देती है, और इससे वो कैट है और पैनिक हो जाती है और इधर उधर भागना शुरू कर देती है। जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है तो उसे टकराती है, और उसकी साउंड से जो एग्जॉसिस्ट है वो और डर जाता है, और डर के मारे उसे उस रूम में उस शॉप में नहीं रुका जाता और वहाँ से वो भाग आता है। "Ayo," wailed the shopman. "I have to have special protection. I can go in. No candle, no light. We'll have to manage in the dark. If I hadn't been quick enough, you wouldn't have seen me again. Ayo, what's to happen to my shop and property?" "We'll see, we'll see. We'll do something," assured the other heroically, he himself looking airy in the beam of light that fell on him from the street. The shopman was afraid to look at him, with his grisly face and rolling eyes, whose corners were touched with white sacrilege. He felt he had been caught between two devils, difficult to decide which one was going to prove more terrible, the one in the shop or the one outside. The exorcist sat upright in front of the closed door as if to emphasize, "I'm not afraid to sit here. And, Commander, get me a copper pot, a copper tumbler, and a copper spoon. It's important. Why copper? Don't ask questions." "All right, I'll tell you. Because copper is a good conductor. Have you noticed electric wires of copper overhead? What is it going to conduct now?" तो जब एग्जॉसिस्ट है वो शॉप से बाहर आता है तो उस पर जो शॉपमैन है वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि अब उसकी शॉप का क्या होने वाला है। और एग्जॉसिस्ट बोलता है कि उसे अब स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई लाइट है ना कैंडल है, और वो अंधेरे में ही उसे काम करना पड़ेगा। अगर वो जल्दी से बाहर ना आता शॉप से तो वो लोग उसे दोबारा ना देख पाते। और वैसे तो वो डरा हुआ था, बट फिर भी बाकी सब लोगों के सामने वो ऐसे दिखा रहा था कि जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत ही बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके लिए अब वो दो डेविल्स के बीच में फंस चुका था। एक जो शॉप के अंदर है जिसे कि वो स्पिरिट मान रहे हैं, और दूसरा शॉप में। तो इस पे जो एग्जोसिस्ट है वो दिखावा करता है ना डरने का, और शॉपमैन को बोलता है कि वो स्पिरिट से नहीं डरना, और उसे कोपर पॉट लाने के लिए बोलता है, और उसके
पूछने पर बताता है कि जो कॉपर है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उसमें कॉपर है वो यूज़ हुआ है। और इस पे शॉपमैन है जो वो पूछता है कि अब इस कंडक्टर का क्या यूज़ है। डोंट आस्क क्वेश्चंस। All right, I'll tell you. I want a medium which will lead my mantras to that horrible thing inside. Without further questioning, the shopman produced an aluminium pot from somewhere. I don't have copper, but only aluminium. In a country, let him be the poorest man, but he'll own a copper pot. But here you are calling yourself a soka. You keep nothing, no candle, no light, no copper, said the exorcist. In my village home, we have all the copper and silver. क्योंकि यहाँ पर शॉपमैन के पास कोई भी कॉपर का जो बर्तन है वो नहीं था, तो इसलिए वो एल्युमिनियम पोट लाता है। और इसे देखकर जो एग्जॉसिस्ट है वो बोलता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम इस देश के सबसे गरीब इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास ना ही कोई कैंडल है, ना ही कोई लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और अब तुम्हारे पास ना ही कॉपर पोट है। How does it help you now? It is not your village house that is now being haunted, though I won't guarantee this may not pass on there. Anyway, let me try. He raised the aluminium pot and hit the ground. Immediately from inside came the sound of the jug hitting something again and again. Don't break the vessel, cried the shopman. Ignoring his appeal, the exhausted hit the ground again and again with the pot. That's a good sign. Now the spirits will speak. We have our own code. He tapped the aluminium pot with his knuckles in a sort of Morse code. He said to the landlord, "Don't breathe hard or speak loudly. I'm getting a message. I am asked to say it's the spirit of someone who is seeking redress. Did you wrong anyone in your life?" "Oh, no, no," said the shopman in panic. "No, I have always been charitable." एल्यूमिनियम पोर्ट के आ जाने पर एग्जॉसिस्ट है वो एल्यूमिनियम पोर्ट को ज़मीन पे बहुत ज़ोर से मारता है। तो इस पे शॉपमैन बोलता है कि कहीं तुम इस पोर्ट को तोड़ मत देना। तो इस पे एग्जॉस्टिस्ट उसे जवाब देता है कि ये उसका स्पिरिट से बात करने का तरीका है, ये उनका एक सीक्रेट कोड है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। तो उसके बार बार उस पोर्ट को ग्राउंड पे टकराने से जो कैट है वो और ज़्यादा पैनिक हो जाती है और इधर उधर भागना शुरू कर देती है। और इसके बाद एग्जॉसिस्ट है वो बोलता है कि ज़्यादा लाउडली बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे एक मैसेज मिल रहा है स्पिरिट की तरफ से। और उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ गलत किया है। और इस पर शॉपमैन जवाब देता है कि नहीं, उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। द एग्जॉस्टिस्ट cut him short. "Don't tell me anything, but talk to yourself and to that spirit inside. Did you at any time handle? Wait a minute, I'm getting the message." He held the port's mouth to his ear. "Did you at any time handle someone else's wife or money?" The shopman looked horrified. "Oh, no, never." "Then what is it? I hear about you holding a trust for a widow." He brooded while the cat inside was hitting the ventilator, trying to get out. The man was in a panic now. "What trust? May I perish if I have done anything of that kind. God has given me enough to live on. I have told you not to talk unnecessarily. Did you ever molest any helpless woman or keep her at your mercy? If you have done a wrong in your childhood, you could expiate. How? That I will explain, but first confess. Why?" तो एग्जॉसिस्ट है वो शॉपमैन से जब क्वेश्चन करता है तो शॉपमैन उसे बोलता है कि ऐसा उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया है। तो उसके बाद एग्जॉसिस्ट है जो वो उसे और क्वेश्चन करता है
कि क्या कभी उसने ज़िंदगी में किसी और की वाइफ को या किसी और के पैसे को अपने पास रखा है। तो इस बात पे जो शॉपमैन थोड़ा घबरा जाता है और एग्जॉसिस्ट उससे एक और क्वेश्चन करता है कि क्या उसने कभी किसी की विडो को हैंडल किया है। तो वो शॉपमैन है वो सोच में पड़ जाता है और एग्जॉसिस्ट को बोलता है कि उसे जो फालतू की बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। और फिर जो एग्जॉसिस्ट है उसे क्वेश्चन करता है कि क्या उसने कभी भी किसी हेल्पलेस वुमेन को मोलेस्ट किया है या किसी और के साथ कुछ गलत किया है। A true repentance on your part will emasculate the evil spirit. The jug was hitting again, and the shopman became very nervous and said, "Please stop that somehow. I can't bear it." The exorcist lit a piece of camphor, his stock in trade, and circled the flame in all directions to propitiate the banshee spirits around so that they may come to our aid. The shopman was equally scared of the banshee spirits. He wished at that pale starlit hour that there were no spirits whatever, good or bad, sitting on the payal and hearing the faint shrieking of a night bird flying across the sky and fading. He felt he had parted from the solid world of men and material and had drifted on to a world of unseen demons. तो उस बीच जब एग्जॉसिस्ट और शॉपमैन के बीच में बात हो रही है उस टाइम पे जो कैट है वो पैनिक की वजह से जो आवाज़ें ज़्यादा तेज़ करना शुरू कर देती है। इससे जो शॉपमैन है वो और ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करता, वो किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच गया है। The exorcist now said, "Your conscience should be clear like the Manslaughter Lake. So repeat after me whatever I say. If there is any cheating, your skull will burst. The spirit will not hesitate to dash your brains out. Alas, alas, what shall I do?" Repeat after me these words. I have lived a good and honest life. The shopman had no difficulty in repeating it, in a sort of low murmur, in order that it might not be overheard by his tenants. The exorcist said, "I have never cheated anyone." Cheated anyone, repeated the shopman. "Never appropriated anyone's property." The shopman began to repeat, but suddenly stopped short to ask, "Which property do you mean?" "I don't know," said the exorcist, applying the port to his ear. "I hear of some irregularity." तो अब जो एग्जॉसिस्ट है वो कहता है कि जो तुम्हारी आत्मा है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए मानसरोवर लेक की तरह। और उसे कहता है कि अब वो कुछ बोलेगा और शॉपमैन को उसे रिपीट करना पड़ेगा। अगर वो झूठ बोलेगा तो जो स्पिरिट है वो उसकी स्कल को बर्स्ट कर देंगे। तो इस पे जो शॉपमैन है वो एग्जॉसिस्ट के पीछे पीछे सब बोलना शुरू कर देता है। पर जब बात आती है कि उसने किसी की प्रॉपर्टी को तो नहीं अपने कब्जे में लिया है, तो इस बात पे वो पूछता है कि एग्जॉसिस्ट है जो वो किस तरह की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। और एग्जॉसिस्ट बोलता है कि उसे नहीं पता कि किस तरह की प्रॉपर्टी। "Oh, it's not my mistake," the shopman wailed. "It was not my mistake. The property came into my hands, that's all." "Whom did it belong to?" "Honappa, my friend and neighbor. I was close to his family. We cultivated adjoining fields. He wrote a will and was never seen again in the village. In your favor." "I didn't ask for it, but he lied me." "Was the body found?" "How should I know? What about the widow?" "I protected her as long as she lived under the same roof. Not here in the village. You were intimate." The shopman remained silent. "Well, she had to be protected. How did she die?" तो अब जो शॉपमैन है वो एग्जॉसिस्ट को इंटरप्ट करता है बोलते हुए को
क्योंकि उसे जो अपनी एक मिस्टेक है वो याद आ गई थी, क्योंकि जो एक प्रॉपर्टी थी वो उसके पास थी जो उसकी खुद की नहीं थी। और पूछने पे वो बताता है कि वो प्रॉपर्टी उसके फ्रेंड होनप्पा की थी, जो कि उसके बहुत क्लोज था, और उनके जो फील्ड्स है वो भी पास पास में थे जिन्हें वो कल्टीवेट किया करते थे। और होनप्पा ने एक विल लिखी थी जिसके बाद उसे विलेज में दोबारा नहीं देखा गया। पर वो किसके फेवर में थी ऐसा कुछ क्लियर नहीं था, क्योंकि होनप्पा है जो अपने फ्रेंड को बहुत लाइक करता था, जो कि शॉपमैन है, तो शायद वो प्रॉपर्टी उसने उसी के नाम की हो। और एग्जॉर्सिस्ट पूछता है क्या उसकी बॉडी तुम्हें मिली थी, तो शॉपमैन बताता है कि मुझे कैसे पता होगा, क्या तुमने उसकी विडो को रखा था। तो उसने बताया कि हाँ, उसने उसे प्रोटेक्ट किया था। और इसके बाद और क्वेश्चंस जो करता है कि क्या उसने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की, तो इस पे शॉपमैन है जो वो चुप रहता है। और फिर एग्जॉस्टिस है वो क्वेश्चन करता है कि वो कैसे मरी थी। I won't speak a word more. I have said everything possible. If you don't get that devil spirit after all this, you will share the other's fate. He suddenly sprang on the exorcist, seized him by the throat, and commanded, "Get that spirit out after getting so much out of me, otherwise." He dragged the exorcist and pushed him into the dark chamber of the shop. Thus, suddenly overwhelmed, he went in howling with fright, his cry drowning the metallic clamor. As he fumbled in the dark with the shopman mounting guard at the door, the jug hit him between his legs and he let out a desperate cry, "Oh, alas, I am finished." And the cat, sensing the exit, dashed out with its metal hood on, jumped down onto the street, and trotted away. The exorcist and the shopman watched in silence, staring after it. The shopman said, "After all, it's a cat." "Yes, it may appear to be a cat." "How do you know what is inside the cat?" The shopman brooded and looked concerned. "Will it visit us again?" "Can't say," said the exorcist. "Call me again if there is trouble," and made for his cubicle, saying, "Don't worry about my dakshina now. I can take it in the morning." एग्जॉस्टेड जब उसकी पास लाइफ के बारे में से क्वेश्चन करता है, तो इससे इरिटेट होकर जो शॉपमैन है वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, और बोलता है कि अगर वो स्पिरिट को यहाँ से नहीं भगा सकता तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जैसे ही वो उसे शॉप में धक्का देता है, इसके बाद जो कैट है वो उस शॉप से बाहर निकलने में जो सफल हो जाती है, और वो दोनों साइलेंटली उस कैट को जाते हुए देखते हैं। तो शॉपमैन बोलता है कि ये तो सिर्फ एक कैट थी, और एग्जॉर्सिस्ट है जो उस पे जवाब देता है कि तुम्हें क्या पता कि इस कैट के अंदर क्या था। तो इस पे शॉपमैन पूछता है थोड़ा सोचते हुए कि क्या ये कैट उन्हें फिर से दोबारा है जो विजिट करेगी। एग्जॉर्सिस्ट बोलता है कि पता नहीं, उसे बुला लेना अगर वो कैट है वो दोबारा उसके लिए कोई ट्रबल क्रिएट करे। और वो अपने रूम में वापस चला जाता है, ये कहते हुए कि वो अपनी दक्षिणा है वो सुबह ले लेगा, उसके बारे में चिंता ना की जाए।